Hello everyone, I hope I am audible and visible. Let me have a quick tech check. Hello everyone, I hope I am audible and visible. Yes, I'm properly audible and properly visible. Right. So let's have what we are having today. है ना? क्या है आज का न्यूज़पेपर क्या कह रहा है? So there are something which are regular. For example, we had this particular Venezuela, US. भैया हम 32 million barrel जो है वो उठा के लेके जाएंगे अपने साथ. Yeah, right. Then we had this uh, Indian news is like which includes some GDP growth ratios, some other particular thing. Then Ambernath near Mumbai, there is a municipal corporation जहाँ पे कुछ नया ही हो गया. बीजेपी कांग्रेस ने अलायंस बना लिया. सर, there are tons of things which are going on, right? And we are like going to deal with these things today. So we are like one by one क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है. तो सबसे पहले बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन है they issues the SIR hearing notice to Professor Amartya Sen. Yes, Professor Amartya Sen, he is a former Nobel laureate, Bharat Ratna, right? जो इलेक्शन कमीशन है like that issued notice like कि भैया आप अपने वो वेरीफाई करें. Right, census का पहला phase होगा, we'll discuss it in detail, and then we are going to discuss some other things. So let's start with what we are having. The government pegs real GDP growth at 7.5. I'm concerned about the over the time. So what exactly happened? Government of India ने कुछ recent particular वो दिए data दिए, which includes the just a minute. है ना? Next financial year outcome. So they said कि even we are having 50% US tariff and later in like labor incentive section. So quarter one, quarter two, जो है economy का that is having 7.8 and 8.2, and the second half will show 6.8 consumer spending, 7% slower than the last year. So overall factor में we are going to have good GDP growth, ऐसा कहना है किसका? गवर्नमेंट का. Now let's come to this कि क्या कह रहे हैं सच लाइक ट्रम्प. सो ट्रम्प का ये कहना है कि जब से हमने वेनेजुएला को क्या किया है काइंड ऑफ एक नए स्टेट में लेके जाने की कोशिश की है. देन टू लाइक जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं भरपाई करने से लेके इन बाकी सब उसमें तो जो 50 million barrel ऑयल है राइट यूएस को वेनेजुएला की तरफ से दिया जाएगा. सो व्हाट they are saying, like there is new particular term which is trending in Twitter last days, that is the Monroe Doctrine. Yes, so there was a Monroe Doctrine in America जो ये कहता था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी शुड बी द सिंगल सुपर पावर. तो थोड़ा सा क्या हो गया था, फेड अवे हो गया था. एंड अमेरिका मेड अप लाइक इट्स प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. या देयर आर लाइक सेवरल प्लेसेस जहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के बाद से अमेरिका के जो होते क्या कहना चाहिए ट्रूप्स थे वो वापस ही नहीं आए. Yes, America is like that. Don't worry. So वहां से लेके अब तक presence थी, but this time they decided to go direct one-on-one with the Venezuela and like they are challenging the Chinese or Russian aggression. Yes, अभी तक तो चाइना और रशिया के aggression को अमेरिका काउंटर कर रहा था, but for now he cannot do that. So वो एक particular चीज है. We had like tons of discussion on this, so हम ज्यादा वो नहीं करेंगे. Just according to America and Trump, right, this particular thing is about compensation जो हमने झेला है इतने सालों से. Okay, this was the news which had like uh, क्या बोलूं, it was a shocking news, but anything can be possible in the politics. Yes, you can see BJP Congress, they are like just so BJP and Congress, they are actually the opposition of each other, but in a local like unit, a local constituency of Ambernath near Thane, right?
Okay. They had a local body poll, which had, I guess, 60 seats. Yes, in which Shiv Sena, that is Shinde group, got, I guess, 27, and BJP got 14. Yes, and Congress got 12, and NCP Ajit Pawar, right? They got 4, I think. Uh, yes, and there were particular independent people. So overall fashion में they were supposed to get 31 seats to mark the majority. So they combinedly, yeah, right, plus one independent candidate, Joda, right? They combinedly marked the 32 somewhere like 32 28, and they marked the 32 mark. And Shiv Sena Sindhe was somehow, which was the largest party actually, that turned out in the local poll. It was in opposition and they made a government together. So Congress, BJP, NCP, and जो AIMIM और एक independent candidate, they combinedly form a government. And they declared the BJP candidate as the president. Yes, what was his name? Abhijit Gulab Rao. But right, they named him the group leader, or they named him as the Ambernath Vikas Aghadi. They named their alliance as Ambernath uh, Vikas Aghadi, and they made the government. But the leadership at center, like so state level leadership or the central level leadership, they are not happy with this. So they have like strictly mentioned that uh, they are not going to accept this alliance. And this happened without the information, without the discussion of the upper level leadership. So बात वही थी घर के like there are two families which were fighting from last several years, and घर के बच्चे they decided कि हम एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं बगल के मोहल्ले से, तो उन्होंने आपस में टीम बना ली और घर वाले कुछ नहीं है, दैट इज व्हाट समथिंग हैपेंड. सो बीजेपी की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर है, राइट, क्या कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस, दे सेड कि भैया ये जो अनएक्सेप्टेबल अलायंस है, that is not going to be accepted, and they want immediate dissolution for this. It's stating that Congress or AIMIM, they actually violate the party philosophy. Yes, but doesn't BJP said we are no, that is different. जो यहाँ पे हुआ that was different, right? वो अलग कहानी है. दक्ष अपन बात करेंगे उसमें, राइट. सो कांग्रेस की तरफ से जो वो है महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, राइट, उन्होंने सारे के सारे 12 जो पर्टिकुलर वो हैं उनके म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं उनके साथ बात की और उनको बोला कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. प्रदीप पाटिल, राइट, एंड इन्होंने ये भी बोला कि अंटिल एंड अनलेस द लाइक द स्टेट लेवल लीडरशिप अप्रूवल, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. शिवसेना का अपना क्रिटिसिज्म है कि भैया एक साइड आप कांग्रेस को भारत की बात करते हैं और दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो, कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हो. सो दिस वाज समथिंग दैट इज बीइंग सीन एज ऑफ लाइक आज के टाइम पे, अगर बात करें, है ना, तो दोनों पार्टी ने इंस्ट्रक्शन तो कर ही दिया कि इस अलायंस को स्क्रैप डाउन कर दो, बट अभी कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं था. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. मूविंग ऑन, this is the good news. Jharkhand to be debuted at the World Economic Forum at Davos. Yes. So Jharkhand India का one of the like poor state category में जाता है, but yeah, it has a mineral rich soil. They had tons of coal, they had tons of iron ores and some other particular ore, and they are creating a delegate of 11 members. Yeah, right, and they are supposed to attend that World Economic Forum Summit in Davos. Yes, Switzerland. In like I guess 19 January के around hosted होने वाली है. So this will include the Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, right, and the overall delegate will try to attract the sustainable development, global investment to promote Jharkhand and to develop Jharkhand. Now, थोड़ा सा dates की अगर बात करें, we are talking about World Economic Forum.
है ना? सो डेट्स की बात करें तो शायद 19 to 23 के आसपास ये समिट होने वाली है। एंड झारखंड जो है उसका पार्ट बनेगी। एंड झारखंड आई गेस 18 to 26 जनवरी तक के झारखंड का जो डेलीगेशन है वहां पे रहेगा। दे हैड देयर ओन थीम ऑफ ग्रोथ इन हार्मोनी विद नेचर। दैट इज समथिंग जो कि एक अच्छी चीज निकल के आई थी। राइट, सो दैट इज growth in harmony uh, with nature. Right? This is the theme through which they are going to approach the global investment for the sustainable development. Their goal is this कि भैया global industries के leaders आए, they understand the land, they understand the culture, and उसके बाद फिर वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें जिससे कंट्री जो है, सॉरी स्टेट जो है वो ग्रो कर सके। राइट नाउ जिस सेक्टर्स में वो सोच रहे हैं तो दैट इज दोज आर दो सेक्टर जो ऑलरेडी झारखंड में आपको इजीली अवेलेबल। फॉर एग्जांपल माइनिंग सेक्टर जो है, राइट। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे थोड़ा बहुत इसका वो है। फिर उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, एंड द लास्ट वन इज टेक्सटाइल, टूरिज्म एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ये चारों के चारों ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर हैं जो ऑलरेडी झारखंड के पास इजीली अवेलेबल है। right? तो झारखंड भी इसी यूज में जा रहा है। Like, come on, if Jharkhand and other states start participating in such kind of events, जहाँ पे दुनिया भर के वो आते हैं, क्या कहना चाहिए, इकोनॉमिक लीडर्स आते हैं, इंडस्ट्रियल लीडर्स आते हैं, एंड दे अट्रैक्ट सच काइंड ऑफ थिंग, तो फिर ये एक अच्छा पर्टिकुलर साइन होता है। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। Yes, it's a kind of international non-governmental organization, NGO, right? And it's also a lobbying organization, according to some sources. And they like meet once only in Davos, Switzerland, and they bring like global leaders, industry leaders, business leader, political leader, academic leader to address the problem of the international economy and the challenges. Right, how to use analysis section, like first newspaper और first your session। दक्ष, दोनों चीजें हैं। लाइक अगर तुम्हें पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना तो एटलीस्ट जो हमने हाईलाइट किया हुआ है वो तो तुम्हें पूरा पढ़ना चाहिए और एनालिसिस सुनना चाहिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव। सो लेट्स कम बैक टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिसेंटली जो होने वाला है दैट इज 19 to 23 जनवरी, एंड दे हैड अ डिफरेंट थीम दिस टाइम। They had a theme of a spirit of a dialogue. Yes, yes, this was its theme, a spirit of a dialogue, right? And this is the 56th edition, I guess, yes. Interconnected priorities जो भी हैं established, वो चलती ही रहेंगी जैसा कि पिछले कई सालों से आ रहा है। Now, they are going to have more corporate leaders to participate in this particular year, and they are especially going to focus on AI. यस, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हो, कि एआई में किस तरीके से आ रहे हैं, या हाउ पीपल कैन इन्वेस्ट बेटर इन एआई इन दिस एज ऑफ एआई। ये सारी चीजें जो हैं ये बात करने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूं आगे की, तो जो ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स थे उसमें क्लॉस चॉवेज जो थे, ही वाज द फाउंडर इन 1971। मैं अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूँ। एंड पहले ये यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के नाम से हुआ, बाद में ये ट्रांजिशन हो गया किसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। right? And they have their own particular set of uh, non-governmental organization. For now, I guess its president is Borg Pent, right? To make sure कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे। मूविंग ऑन, देर आर लाइक टू थ्री मेजर थिंग जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो स्टेट लेवल न्यूज़ है उस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो असम की ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, ASU, right? They said कि error-free voter list in Assam won't be possible until unless NRC is there. हमने लास्ट टॉस में एनआरसी के बारे में बात की थी, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला केस डिस्कस किया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एनआरसी किस तरीके से होती है। नाउ आज के हमारे टॉपिक में सेंसस भी है, मैंने पढ़ा था। तो सेंसस इज वन ऑफ द थिंग जिसके बाद एनआरसी पॉसिबल है, तो सेंसस के बाद हो सकती है।
यहाँ पे इसको एक पॉलिटिकल उसमें देखा जा रहा है कि भाई बिना एनआरसी के करेक्ट और एरर फ्री वोटर लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, ये उनका कहना। सो एनआरसी के बारे में हम बात करेंगे। एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। सो देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ कंट्री जिसकी सेंसस होती है, तो उसमें कितने लोग हैं, व्हाट देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट देयर लेवल ऑफ डिफिकल्टीज इन लाइफ, वो बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सोचने के बाद एनआरसी उन लोगों का है जो एक we can present their documentation of citizenship technically, राइट? तो एनआरसी तभी पॉसिबल है जब सेंसस हो, और सेंसस 2011 के बाद नहीं हुई है। सो एंड इट स्टार्टेड, फर्स्ट फेज जो है अभी शुरू हो रहा है। तो यस दे कैन हैव इट बट आफ्टर दिस सेंसस। एंड अगेन सुकमा में छत्तीसगढ़ में 26 माओइस्ट जिनके ऊपर 64 लाख की बाउंड्री थी, दे सरेंडर। विजय की जो फिल्म आ रही है दैट इज जननायकन, अभी के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकती है। एंड विजय थालापति विजय की बात होगी। मूविंग ऑन, दिस वन, Kerala's new language bill is unconstitutional according to Karnataka government. So what is Kerala's new language bill? हम अगर उसकी बात करें तो केरला की गवर्नमेंट ने, राइट, 2025 में एक पर्टिकुलर बिल लेके आया अपने असेंबली में, जिसमें जो मलयालम है वो बनी द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। Yes, they said कि we want to preserve our cultural identity, our language. जो primary development था वही था, name was the bill was Malayalam language bill 2025. uh, Kerala Assembly में आया अक्टूबर में, and the bill introduces और जो भी है साइन वाइन गवर्नर ववर्नर इनके बाद फिर वो आगे बढ़ चलेगा। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस? हम थोड़े से प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन में पहला चीज तो ये है कि मलयालम को एक सेंट्रल लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस, लॉ एंड व्हाट वी कैन से पब्लिक लाइफ, पब्लिक जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है उसके लिए ये मार्क कर देंगे। द लीगल लैंग्वेज ऑल्सो भी मलयालम, कोर्ट वगैरह में। फिर एजुकेशन में मलयालम विल बिकम द मैंडेटरी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10। एंड उसके अलावा जो पर्टिकुलर अदर पर्टिकुलर वो है माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए भी ये चीज वो हो सकती है, कंपल्सरी होगी। सो कर्नाटका गवर्नमेंट इज सेइंग कि दिस इज समथिंग जो कि माइनॉरिटीज के क्या है, अगेंस्ट है। सो देयर आर कन्नड़ स्पीकिंग माइनॉरिटीज इन केरला। सो अकॉर्डिंग टू कर्नाटकन गवर्नमेंट, दे might not be having Malayalam as compulsory first language, right? So ये जो ड्राफ्ट है वो एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल का। सो उन्होंने अपने अपने लेवल पे बात की है। They also said कि this kind of bill actually go against the minority and their protection. People start discriminating with the minorities based on their language. सो यस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये सही तरीके से हो गया है। बिल अभी गवर्नर के साइन के लिए बचा हुआ है। गवर्नर के साइन के होने के बाद ये चीजें क्या हो जाएंगी, एज अ बिल हो जाएगी, कि मतलब एज अ एक्ट जो है वो सेटल हो जाएगी। उसके अलावा लेट्स मूव टू द दिस, दीज आर सम पर्टिकुलर। ओके सो वी हैव सम गुड एंड बैड न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर ने टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो 22 सस्पेक्ट है उनको अरेस्ट किया है। दिस इज द सेम टेरर टेरर फाइनेंसिंग जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, चाहे वो दिल्ली एनसीआर वाले ब्लास्ट उसके अराउंड हो, वो जो पुराने थे। एंड बैड न्यूज फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स, एससी रिजेक्ट्स द पिटीशन सीकिंग प्रोब इनटू द क्लैट पेपर लीक। जी हाँ, there are some particular persons who believe कि क्लैट का पेपर 2026 का जो हुआ था वो लीक हो गया था। They presented some screenshot from some Telegram group, I guess, and some WhatsApp group, and some other proof कि भाई साहब पेपर लीक हुआ है, पेपर दूसरा होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट सेज कि भैया ये नहीं है, अब बहुत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड वी ऑल्सो हैड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाँ ये नहीं होने वाला, ठीक है। यस, कुछ लॉ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने
सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज और बैकग्राउंड और इन सब चीज़ों को लेके बोला, स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए कि भाई पेपर एक एक दिन पहले, एक शाम पहले क्या हो गया था, प्रेजेंट किया गया था, मतलब लोगों को दे दिया गया था। तो ये एक गलत चीज थी, है ना। एंड बाकी लोगों के लिए नेक्स्ट डे आया था, तो फिर दे वर लाइक कि हमें पेपर लीक हुआ है और हमें दोबारा पेपर होना चाहिए। तो जो वो हैं, क्या कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है, दे सेड कि नहीं, देयर इज नो सच थिंग लाइक पेपर लीक, हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है। यस। language of a state comes in which list? Language actually जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो सेंट्रल का पार्ट होती है, बट हाँ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए वो चीज कर सकते हैं and उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। This happens in after every exam. It's not about every exam. Hello Ishan. The thing is, there might be some chances कि ऐसा कुछ हुआ हो, but that doesn't mean कि मतलब उसके chances बहुत कम है। इट्स नॉट लाइक दिस कि 99% ऐसा हुआ ही है, देयर लाइक 0.01% चांस कि ऐसा हो सकता है, बट आई बिलीव कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, और ऐसा हुआ भी नहीं है। आई हैव सीन दो स्क्रीनशॉट जो टेस्ट के बाद, मतलब एग्जाम के बाद सर्कुलेट हुए थे, एंड टीम ने अच्छा खासा डिस्कशन भी किया था उस पे, एंड वी फाइंड आउट कि भैया ये तो मजे चल रहा है, एंड कुछ लोग कहना है एआई जनरेटेड है, कुछ लोगों को कुछ और कहना है, सो लेट इट। ठीक है, let's have our next news, and it was unfortunate, but the things are getting better. So Sonam Wangchuk, she defers hearing on Sonam Wangchuk detention day by a day. Yes, on 7th of January, Supreme Court of India deferred the hearing on a plea challenging the detention of climate activist Sonam Wangchuk, scientist and climate activist Sonam Wangchuk, under the NSA, that is the National Security Act. Yes. सो आपको पता ही होगा कि दैट वाज लाइक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, जैसे सोनम वांगचुक एनएसए के अंडर, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्टेड हैं, अभी के टाइम पे आई गेस जोधपुर जेल में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। सो जोधपुर सेंट्रल जेल में है, एंड अदर रीजंस हैं जिसके जिसके कारण ये हुआ। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड मैं बात करता हूँ, तो Sonam Wangchuk and the people of Ladakh, they were demanding the place in sixth schedule. First of all, right. Second, they had a protest, peaceful protest. Before that, Sonam Wangchuk did, I guess, three hunger strike as well, but nothing happened. But one fine day, people got violent and they burned some particular state properties. Okay, by the way, this is the same man who BJP was being. Let's not get into the politics, right? Let's stay to the topic, right? Now the topic is this कि इनको अरेस्ट किया गया था by the demand of this, क्या कहते हैं, उन्होंने डिमांड किया था सिक्स शेड्यूल का, एंड सिक्स शेड्यूल की डिमांड के कारण क्या हुआ, इनका इनकी प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गई है, उसके बाद से इन्हें अरेस्ट किया गया अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट। एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर तो ठीक है, किया ही गया, एंड इन्हें तब से लेके अब तक डिटेंशन में ही रखा गया है, एंड दैट इज कंटिन्यूअस। सो अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, क्या कहना चाहिए, पीवी बरेला, they requested time to review the matter as he saw a new addition of the he was a new addition to the bench. देखिए सोलिसिटर जनरल जो थे तुषार मेहता, उनका भी यही आर्गुमेंट था कि दे विल एंगेज अनदर पार्ट ऑफ द हियरिंग ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द शेड्यूल टाइम, एंड वर्चुअली अपेयर होना था सोनम वांगचुक को, बट जो भी है, आपको होना है तो हो जाएंगे वो जब भी टाइम आएगा। मूविंग ऑन, जो डिटेंशन ग्राउंड्स है उसकी बात करें तो सितंबर में प्रोटेस्ट हुई थी, वो वायलेंट हो गई थी, उसी के बेसिस पे दे आर कॉलिंग इट necessary detention to prevent activities which can
somehow damage the security of the state. सो उनका कहना है कि जो प्रोटेस्ट वायलेंट हुई है उसके पीछे ये रीजन है, तो अगर ये वहां पे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेंशन, राइट। जो उनकी वाइफ है, जो पिटिशनर है, उन्होंने इस डिटेंशन को इलीगल माना है, आर्बिट्री माना है, और इनका कहना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेक्युलेटिव क्लेम्स, दे डोंट हैव this firm proof that the violence was his idea. एंड उनका ये भी कहना है कि he was the one who publicly condemned the violence, एंड जो उनके साथ हो रहा है, दैट जो डिटेंशन उनके साथ हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट इज वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। बेटा ये सॉलिसिटर जनरल है। यस, द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाओ जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी हो, या रजिस्ट्रार जनरल हो, या सीएजी हो, या सॉलिसिटर जनरल हो, अटॉर्नी जनरल हो, स्पीकर हो, चेयरमैन हो राज्यसभा के, स्पीकर हो लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन हो दोनों जगह पे, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बनानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, वो सरकार के वकील हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, कोर्ट में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, moving on to good news, we can say, right? Center moves to restore the government in the Manipur hold the review meeting. So central government, होम मिनिस्ट्री जो है, हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की है, राइट। यस दक्ष, वेरी गुड। रिव्यू मीटिंग में ही डिस्कस अबाउट दी मणिपुर, राइट। मणिपुर में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या कंडीशन है, बाकी सारी चीजें। सो इट कंडक्टेड टू सिक्योरिटी मीटिंग इन अ वीक, डिस्कस प्रोस एंड कॉन्स ऑफ extending president rule and a security deployment in Manipur. Kuki-Zo group opposed the government. Formation remained firm and demand for a separate administration. So मणिपुर की बात करते हैं तो if I'm not wrong, this violence started in May starting 2023, right? Yes. And there were two communities. One of them was Maitei, another one was Kuki Zo. So cookies, you can say, right? And the violence started, and the violence was bad. है ना? Females suffered, children suffered, elderly suffered, the young suffered. That तो होता ही है। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके कुछ चीजें ठीक हुई, बट द गवर्नमेंट फेलियर वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टीमेटली इन स्टार्टिंग, आई गेस इन फेब 2025, जो चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, एन वीरेन सिंह, यस, उन्होंने रिजाइन किया। द गवर्नमेंट फाइनली, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, राइट। तो तब से प्रेसिडेंट रूल है फरवरी से, दिस इज बीइंग लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर। तो एक साल के अंदर द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम उसको एक्सटेंड करें या रिस्टोर करें गवर्नमेंट को वापस। सो प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन February 13, 2025, and state that was that directly comes under the control of central and union government through a governor. Recently, अभी मार्च 2025 के बाद से there are small clashes जिसमें लोगों की जान गई है। एंड अभी जनवरी में, 7 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक ऑर्डर आया है कि जो फॉरेंसिक वो है, एग्जामिनेशन है ऑफ 48 मिनट, देयर इज अ क्लिप, है ना, यहाँ पे ये बगल में लिखा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ क्लिप विच इज लिंक्ड to former Chief Minister Veer Singh, and this clip is a 48 minute audio, and it is about कि भैया किस तरीके से क्या करना है, because he belonged to Meitei community, there was a violence against Meiteian cookies, so उसको जो वो है लैब, फॉरेंसिक लैब है, उसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया। फॉर नाउ
2 दिन पहले जनवरी 6 को भी शायद एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, राइट, जहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो गई थी और कुछ इंजर्ड हो गए थे. So yes, the fresh violence is there. But always there is a hope. So let's hope for the best. Ki this time the government do the right thing. And because this is an unfortunate event. अगर मैं overall fashion की बात करूँ तो government data said approximately 300 people died. Yes, as like late 2025 तक some says 250, 260 के around है, some says 300. But government का कहना था 260 around है and some group are saying more than 1,000 people. But overall 300 के around लोग जो हैं वो उनका death हुआ. Approximate 1 lakh people displaced. The government says 60,000 around. The group, local group who are working on the ground, this says more than 1 lakh people displaced. Property damage हुई लाखों करोड़ों की. जो वेपनरी है ना, 6,000 के आसपास जो वेपन्स है वो लूटे गए. देर आर सम लाइक 70 60 70,000 राउंड्स जो है वो लूटे गए 2025 तक, ऑन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दैट ट्राइब, कि भैया हम लूट रहे हैं क्योंकि हम अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो लूट रहे हैं क्योंकि वो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ऑन वी लेफ्ट इज अ होप सर. नो, वी आर लेफ्ट विद टन्स ऑफ थिंग, है ना. होप के अलावा भी है, वी कैन वर्क हार्ड. सो आपको इसका कॉज पता ही होगा कि हाईकोर्ट के एक ऑर्डर और जो रिजर्वेशन से रिलेवेंट था शेड्यूल ट्राइब के सेटअप में फॉर द मैथई कम्युनिटी, राइट, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई. सो मैथई वर इन मेजोरिटी इन मणिपुर, कुकीज वर इन माइनॉरिटी. जब मैथईस को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया तो कुकीज गॉट ऑफेंडेड एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग एंड द वायलेंस erupted. Now they are having different ethnic and cultural identities, not ethnic, cultural identities. So they started fighting. Now they are demanding separate administration for both the communities, which technically is not going to happen from my side. मैं तो बिल्कुल इसको entertain नहीं करूंगा. And जो illegal immigration है और जो land acquisition है by म्यांमार के जो लोग आगे करते हैं, उस पे भी काफी बात हुई इस मीटिंग में. Correct? So that was two good news. Let's hope for the best. Sir, the thing is, so negative news in the newspaper sometimes send to an existential crisis. Or, uh, see, there are no good or bad news, right? There was always a news. So you have to focus the news. Yes, the thing is कि वो good or bad तब होती है जब उस इवेंट को वो इवेंट तुम्हारे हाथ में, है ना. सो लोड मत लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Again, this was expected and this was actually welcome. Understand the difference. Rahul takes swipe at the PM over the remark by Trump. Chacha Trump, his like regular fashion life, he decided कि भैया I'm a chill person. So उसमें उन्होंने बोल दिया कि मोदी is a good guy and he make me happy वगैरह वगैरह. अपोजिशन जो है उन्होंने इस चीज के लिए मोदी जी को क्वेश्चन पूछा कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं. एंड फ्रॉम माय साइड, मैंने जब से मतलब ट्रम्प को देखा है, ट्रम्प पढ़ना शुरू किया, आई डिसाइडेड कि भाई साहब उसको इग्नोर करने में ज्यादा भलाई है. बट हिज एक्शंस आर नॉट इग्नोरेबल. जो उसने वेनेजुएला में किया, जो वो ग्रीनलैंड में करना चाहता है, एंड आगे जो आगे की जो प्लानिंग है उसकी, दैट इज नॉट समथिंग जो इग्नोर करने लायक है. बट द वे ही स्पीक्स लुक लाइक द लैंग्वेज ऑफ अ डिप्लोमेट और अ लीडर. ही इज नॉट अ लीडर, ये भी तुम्हें भी पता है. एंड वो वही दूसरी कहानी चल रही कि भाई साहब बीजेपी कांग्रेस नेहरू का रोल ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल. सो लेट्स नॉट डिस्कस दिस, दिस इज समथिंग जो कि हमारे उसमें नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एंड ये अपन ने बात कर ही ली थी कि जो हमारे नोबेल लॉरेट हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनको नोटिस आया है इसकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर के लिए. यस, कि भैया स्पेशली इंटेंसिव रिवीजन जो है वो है. Notice state that the age difference between the professor Sen and his parent is less than 15 years. So that is, and hearing will be held at his residence in, क्या कहना चाहिए उधर, जो शांति निकेतन वाला एरिया है वहां पर. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेंसस फेज 1. यस. सो
इंडिया में जो लास्ट सेंसस हुआ था दैट हैपेंड इन 2011. देन वी वर सपोज्ड टू गेट अ सेंसस डेटा इन 2021. बट इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 2020 में हमारे एक प्यारे पड़ोसी देश चाइना में किसी ने चमगादड़ खा लिया. एंड भाई साहब जिंदगी ऊपर नीचे हो गई. यस. सो ड्यू टू कोविड जो ऑनेस्टली हमारा सेंसस होना था वो डिले हो गया. एंड फाइनली लास्ट ईयर इन 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड वी आर गोइंग टू हैव सेंसस. एंड सेंसस के लिए उन्होंने टीचर बाकी सारी चीजें प्रॉपरली जो है वो कर दी है, रिलीज कर दी है. तो अगर मैं फेज 1 फेज 2 की बात करूं तो फेज 1 विल स्टार्ट एट 1 अप्रैल, राइट. एंड 30 सितंबर. हाँ. जो सेकंड फेज है वो फेब 2027 में स्टार्ट होगा. इट हैज सम टाइम. सो फर्स्ट फेज में हर एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में 30 डेज की विंडो होगी जहां पे हाउस टू हाउस जो इन्यूमरेशन है, जो डेटा कलेक्शन है वो होगा. And students can also have an option of self-enumeration for like first 15 days of immediate process. And phase 2 में there is going to create a national reference data जो कि March 1 को मोस्ट प्रोबेबली रिलीज होगा 2027, राइट. एंड फिर उसके बाद उसका रिव्यू एंड बाकी सारी चीजें करते करते फाइनल डेटा आएगा. सो दैट इज समथिंग जो कि अपने लेवल पे सेंसस का काम हो रहा है. Now, census this time is going to be a digital census. Yes. इस बार एक fully digital census conduct कराया जाएगा according to the Home Ministry. They are going to have 35 lakh mobile app, smartphones और mobile application data collection पता नहीं क्या क्या. Then caste wise enumeration में specific schedule caste schedule tribe की बात होगी. And जो other parameters हैं education literacy एंड ग्रोथ और ये वो ये सारी चीजें भी हों. सो ओवरऑल सम 12,000 करोड़ के बजट पे ये पूरा का पूरा जो है वो सेंसस होने वाला है. एंड जो रजिस्ट्रार जनरल है तक से अगर तुम सुन रहे हो, राइट. यस. गवर्नमेंट टीचर अभी रिसेंटली यार ये भी न्यूज थी शायद डॉग्स गिनने का काम भी दिया था बेचारों को. टीचर्स है वो. सो लेट्स कम बैक टू द what we can say topic. So the Registrar General and Census Commissioner of India he is going to manage the entire process. That comes under the Home Ministry. So that's make sure कि उनका नाम लिख लेना. Now what is census अगर मैं बात करूं तो if I'm not wrong कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 है, राइट, जो सेंसस के बारे में बात करता है. Under this article, the population census is a central subject listed under the entry number 69 in the union list. 7 शेड्यूल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लीगली सेंसस एक्ट 1948 जो है वो इसको लीगल एम्पावरमेंट देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई एंड कंडक्ट सेंसस एंड अपॉइंट स्टाफ. और फॉर मी दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस एंड नेसेसरी प्रोसेस. क्योंकि अभी के टाइम पे दो चीजें जो है उसकी बात होगी. एक तो डिलिमिटेशन होना है. दूसरा जो अपना वो है 128 अमेंडमेंट बिल है, जिसको हम वुमेन रिजर्वेशन बिल कहते हैं, राइट. ये भी इम्प्लीमेंट होना है नेक्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन के पहले. तो दिस सेंसस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी फुली डिजिटल. तो मेक श्योर करना कि इसके बारे में पढ़ लेना. एंड चलो आगे बढ़ते हैं क्या कहानी है. गुड गुड गुड. जीनियस दक्ष, प्राउड ऑफ यू. सो साइंस में तो कुछ खास नहीं था. आज ये नेटगिट वाला एडिटोरियल अच्छा है. सो मैंने पढ़ा था द सर्च इंजन फॉर डिजिटल अथॉरिटीज़म. अच्छा एडिटोरियल था, मेक श्योर पढ़ना, राइट. ये भी अच्छा था. लेट्स मूव टू द फॉरेन न्यूज़. क्या कह रहा है, पहले बिजनेस करें फॉरेन करें. हाँ पहले बिजनेस कर लेते हैं थोड़ा सा. सो ईवी रिटेल सेल्स रोज फ्रॉम 16.37%. इट्स अ स्ट्रॉन्ग अडॉप्शन. मेजरली टू व्हीलर्स में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यूनिट्स में. तो इट्स अ गुड थिंग. बट फोर व्हीलर आर पीपल आर आल्सो अडॉप्टिंग. सो अगर मैं मतलब एक ओवरऑल फैशन में अगर टू व्हीलर या
पर्सनल व्हीकल भी इलेक्ट्रिक हो जाते हैं तो इट क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। अभी कल की न्यूज़ अपन ने पढ़ी थी, इसमें तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि स्कूल एंड ऑफिस के अदर एंटिटीज जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग, राइट। भैया, जो यूएस और वेनेजुएला के कारण प्रॉब्लम हो रही वो तो हो ही रही है, आपको पता है। दिस इज अ गुड थिंग, इंडिया स्केल्ड 54.51 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम द विंड एनर्जी इन 2025। सो इट्स अ गुड, like genuinely a good development. Huh. Goldman Sachs tops the global M&A ranking with 1.48 trillion deals in 2025. One of my friend works here, so I know it's a big place. कल हमने बात करी थी, एंड सी देयर इज दिस पर्टिकुलर आइडल आर्टिकल जो रीटर्स में है, पेट्रो डॉलर रिवाइव करने का डिबेट। यस, द थिंग इज कि ओवरऑल फैशन में मेजॉरिटी ऑफ जो पेट्रोल का जो ट्रेड होता है दैट हैपन इन टर्म्स ऑफ डॉलर। देयर आर कंट्रीज जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ब्रिक्स कंट्रीज हैं, राइट, या जो ईरान है, या वेनेजुएला जो है, देयर आर कंट्रीज जो डी डॉलराइजेशन पे काम करेंगे। सो लाइकली वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने का अमेरिका की एक मेजर रीजन ये भी है कि वो जो पेट्रो डॉलर का वो है, स्ट्रेंथ है, वो कमजोर ना हो। पेट्रोलियम जो है वो मेनली डॉलर पे ही चलता रहे। तो इसको पढ़ना इट्स सच अ गुड आर्टिकल। यस, बट इंडिया में ये इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव टू सम न्यूज इन फॉरेन, या कह सकते हैं वर्ल्ड। व्हाइट हाउस सेज ट्रम्प एक्टिवली डिस्कसिंग परचेस ऑफ ग्रीनलैंड। यस, ये चाचा नहीं मान रहे हैं। हाँ, उसको ग्रीनलैंड चाहिए। वो होता ना कि एक बच्चा सुबह उठा और सुबह उसने जिद पकड़ ली, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन। सो लाइक उसका ये कहना है कि वी एक्वायर द आइलैंड इट विल बी इन फेवर ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी। अगर तुम अमेरिका का ओवरऑल फैशन में मैप देखो तो अमेरिका के इस तरफ अटलांटिक है, इस तरफ अपना पैसिफिक है, और यहाँ पे कहीं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के लिए आने से अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। सो उसका ये कहना है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड एक इम्पोर्टेंट वो हो जाएगा आइलैंड। सो वी आर रेडी टू परचेस इट। हमने कल बात की थी ग्रीनलैंड की पब्लिक जो है वो रेडी नहीं है। यस यस यस। तो वो अभी के लिए तो खैर बात चल रही है, and कल हमने उनका वो भी बताया था, क्या कहते हैं, जो वहाँ के लोकल लीडर थे उनका स्टेटमेंट बताया था डेनमार्क की तरफ से भी जो आया था कि भैया अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम नेटो अलायंस तोड़ देंगे, राइट। चलो, बात करते हैं हमारे थोड़े से दूर वाले पड़ोसी की, दैट इज प्रोटेस्ट हिट ईरान and US, Washington Post, read by the Washington attacks on Venezuela, with सारी चीजें। So currently, there is a protest going on in Iran, right? क्यों? Because of economic failure promised by the government. तो थोड़ा सा हम बात करते हैं 2022 के बाद से, राइट। Yes, Greenland is not a country, Dax. Greenland is a territory governed under the Denmark Kingdom, right? And they can have this process जिसमें buy कर सकते हैं। चलो बात करते हैं क्या कहानी। So 2022 के बाद से this is going to be a like big protest going on. Last year हमने देखा था कि ईरान और इसराइल के बीच में एक लंबी चौड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद एक कहना चाहिए कैटास्ट्रॉफिक इकोनॉमिक फेलियर हुआ, एंड उसके बाद पब्लिक जो है वो रोड पे है। जो फॉर नाउ जो डेटा कहता है वो ये कि दिस इज द 11th डे ऑफ कंटिन्यूस अपराइजिंग, characterizing it to shift from purely economic events to the widespread call to overthrow the Islamic Republic. So जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे उससे अब ये जो एस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। There are like 40 people, close to 40 people who died. There are 2,000 people who was being arrested, right, detained, and several hundred injured, right.
एंड जो लोग हैं वो अब जो ईरान में ओवरऑल जो रीच है वो बढ़ती जा रही है लोगों की इस प्रोटेस्ट की। सो 110 सिटीज जो है वो जो है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के अंडर आ चुकी हैं। एंड देर आर लाइक आई गेस देर आर 31 प्रोविंसेस इन ईरान, जिसमें शायद 27 28 प्रोविंसेस में ये जो वो है क्या कहना चाहिए प्रोटेस्ट है वो बढ़ चुकी है। नाउ वी विल गो फॉर द कॉजेस। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक है, या some of the protesters are saying कि the Iranian economic policy is somehow not good, and they have a record low. They are in record low. The inflation rises to up to 50%, I guess 40, 50 के आसपास। And goods जो है, जो रेगुलर गुड्स हैं, जो पब्लिक के लिए नेसेसरी गुड्स हैं, उनकी भी जो वो क्या कहना चाहिए अवेलेबिलिटी है वो मुश्किल होती जा रही है। देर आर प्रोमिसेस जो नए प्रेसिडेंट ने किए थे, बट ही फेल्ड, राइट। एंड जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन रेड वेडिंग, उसके बाद से थोड़ा सा न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इसराइल के साथ जो पर्टिकुलर वो है, इसमें भी लोगों को गुस्सा है। सो ओवरऑल फैशन में 11 दिन से प्रोटेस्ट चल रही है। एंड दिस प्रोटेस्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आफ्टर 2022 protest in Iran. Government, on the other half, doing same thing, right? Tear gas, pellet guns, arrest, right? Internet restrictions, जो अदर पर्टिकुलर वो है फॉरेन मिलिशिया का एंगल हो, ये सारी चीजें डालना। यूएस है ना, अब इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो चाचा ट्रम्प का तो हक बनता है कि आई एम द बिग ब्रदर ऑफ वर्ल्ड्स ब्रदरहुड। यूएस की तरफ से यूएस ने वार्न किया है कि यूएस विल हिट वेरी हार्ड and may intervene Iranian regime continues if they continue to kill peaceful protesters. तो यूएसए की तरफ से तो ये आया है कि they may hit very hard and they may intervene into the Iranian regime as well, and जो अदर चीजें हैं वो तो चली रही। So Iran is facing one of the most widespread protest, है ना? And this is a kind of protest that happened before 1979। यस, जो ईरानी रेवोल्यूशन हुई थी, तो सम ऑफ द एक्सपर्ट सेज कि दिस माइट एक्चुअली लीड टू द रेजिम चेंज, बट अमेरिका का इंटरवेंशन जो है वो क्वेश्चनेबल है। आई मीन वेनेजुएला डजंट हैड दिस काइंड ऑफ फायर पावर एंड मिलिट्री बेसिस, बट Iran is having much more stronger military, right? They have what we can say, well-trained security forces, right? And most probably they also have some nuclear, particular, what we can say, capacity. But for now, they are denying that they are having such kind of thing. Yeah, right. Chat कैसे पढ़ूंगा मैं? Right. This short miss causes a geopolitical. America gonna be news for whole 2026. America stays in news for entire year, right? Or when we are having chattering animal like mouth of a US President Donald Trump, तो वो चीज तो कंटिन्यू हो रही है, राइट? तो एक पर्टिकुलर चीज ये थी, एंड अगेन नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुई थी उसके बाद जो जेंजीज हैं वो अभी भी गुस्सा है, क्योंकि जो नया गवर्नमेंट इंस्टॉल किया था वो अभी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज कंटिन्यू। ओके। एंड स्पोर्ट्स वाले न्यूज में तो ऐसा कुछ खास नहीं था जो डिस्कस करने लायक हो। एंड हाँ, एक चीज ये है कि भैया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से वो किया था, रिक्वेस्ट की थी कि भैया हमारे सारे मैच जो है वो इंडिया में कोई मैच ना हो, राइट? एंड बीसीसीआई रिजेक्टेड दैट। ठीक है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, सब इंडियन नहीं होते कि भाई इंडिया के मैच में पाकिस्तान की जगह कहीं और कराए। सो दैट इज वन थिंग दैट हैपेंड, एंड this is it for today's analysis. I hope you guys enjoying the new pattern. मैं कंटिन्यू कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई गेट सम मैसेजेस इन टेलीग्राम एज वेल, कुछ हमारे बच्चों से, कुछ बाहर के बच्चों से।
So we are continuously changing the entire newspaper analysis to law entrance test centric, राइट? हम उसको यूपीएससी के लेवल पे लेके नहीं जाना चाहते। तो जस्ट मेक श्योर कि इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट, and I will read it and I'll make sure कि if it is beneficial for the student we will change it, right? So this is it from my side for today. I hope you guys enjoyed the session. I hope तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो. Make sure to make notes properly, read properly, and this is it from my side for today. I wish you all the best. Happy learning. लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. See you guys. Good day.